model is effective as compared to waterfall model. Okay, means in this you have four, I can say, quadrants, four second, third, four quadrants. Okay, मजेदार है, हंसेगा. अच्छा you have four quadrants, and each and every quadrant plays their own vital role on the specific role. And moreover, we have our risk analysis here. Okay, means according to the future, according to the requirement in the future, we always do our risk analysis. We will perform such criteria जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम प्रेजेंट मींस अपने प्रेजेंट में ही अपने सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाएंगे कि फ्यूचर के इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाए. लाइक in the morning we are discussing about the COVID situation. For example, जनवरी में ही किसी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया और जो अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाई they used only their thumbprint. So now what happened in the March? What happened due to COVID? You know very well that the employees or the users, whosoever is there in the organization, they are not able to use it using the thumbprint. Okay, after lockdown. So what they have? There should be a risk analysis and there should be a criteria in which they are able to mark their attendance using their eye retina or their face detection. Okay, but if this thing is not embedded in your system, so you can say there is not any identification of future risk. Okay, so this particular thing, identification of future risk, is done in your spiral model. So this is the way that how your spiral is different from your I can say another one, waterfall model. Okay, here you can see we have four quadrants: 1 quadrant, 2 quadrant, 3 quadrant, and 4th quadrant. First is determine objective, second is identify and resolve risk, third is development and test, fourth is the next iteration. Okay, so see, if I talk about objectives, determine objectives. Let's see. 1 second, please. Let's see what is happening in this. In this, what we will do our first of all requirement gathering. Okay, here requirement gathering is done from your customers. Okay, requirement gathering from customers, or you can say client, are done. Okay, based on them objectives are identified. Based on them objectives are identified, and then further you will elaborate them and analyze to start your another phase. Okay, or another phase, or I can say every phase. Fine, let me repeat. You will do requirement gathering from the customers. Based on that, you will your objectives will be identified. Okay, and you will elaborate them, and then further you will analyze them and analyze them so that you can start your another phase. You can start further phases. Fine, I think so it's quite clear to everyone that what we are going to do in our this phase, determine objectives. Okay, now here I can say that this is a solution, a possible solution for the further quadrants. Okay, means whatever the problem you have, you will get to know the particular objective, particular elaboration, and particular solution for the particular reason, particular issue, so that you can go further with the next quadrants. Okay, next we have identify. Okay, let's let me share the image again. See, this one is identify and resolve risk. See here your requirement plan. In the objectives, in the determine objectives, you have only and only your requirement planning. So you will done your requirement planning here. Once the requirement is done, you will be your progress will be shifted towards the second quadrant, where you have your identify and resolve risk. So let's see what we have in this identify and resolve risk. See,
In your second quadrant, whatever the possible solutions are elaborated, okay, whatever the possible solutions you will evaluate to select the best possible solution. Like you have multiple solutions, and from multiple solutions, what you will do, you will find a better and good, I can say, good solution, better and good solution. Fine. Means you will, of course, we will always perform our operations to get better solution. So same here, you will do whatever, you will try to evaluate the best possible solution you can have. Okay, so what happening here, the first of all you will find out, after that risk is associated, whatever the risk is associated with that particular solution is also to be initialized. Okay, means you have to identify that what are the risk, what are the future risk, in a better word, future risk we have related to the solution. Fine. You will identify that what is the possible possible risk, or the what are the you will identify that what are the future risk that we can have with the solution. Okay. Next, once you will analyze, or you will whatever the risk is associated, you will identify it. Next step, you have to resolve that issue with the best possible strategy. Using the best possible strategy, what you will do, you will try to resolve that issue, whatever the issue you have. Means जो भी आपके पास future risk आया है, better use risk, जो भी आपके पास फ्यूचर रिस्क आया है, उस रिस्क को अगर आपको एनालाइज करना है, आपको उसको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप उसको क्या करोगे, उस अपनी पॉसिबल स्ट्रेटजीज लगाओगे, पॉसिबल स्ट्रेटजीज लगा के उसको रिजॉल्व करोगे. ठीक है, तो ये होता है हमारे सेकेंड फेज के अंदर. फाइन. एंड फर्दर अ प्रोटोटाइप इज बिल्ट इन द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन. तो लास्ट में क्या होता है, हम लोग एक प्रोटोटाइप, एक स्मॉल मॉड्यूल डेवलप करते हैं. स्मॉल मॉड्यूल लिख सकती हूँ मैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ प्रोटोटाइप. Okay, let's see. See, you can see a prototype, prototype 1, prototype 2, operational prototype. तो हम लोग यहाँ पे prototype create करते हैं. ठीक है. Once you are done with the prototype, तो आप अपने next version पे चले जाओगे, next quadrant में, that is development and test. You will be shifted to the next phase, development and test. Now let's see what is happening in this quadrant. Okay. Now based on that particular risk, आप अपना solution create कर, रिस्क सॉल्यूशन क्रिएट करने के बाद अपना एक प्रोटोटाइप क्रिएट करोगे. ठीक है. सो इसमें आपके मेन डेवलपिंग चलेगी. आप आइडेंटिफाई करोगे कि फीचर्स क्या क्या आप डेवलप कर सकते हो, व्हाट आर द फीचर्स दैट यू कैन डेवलप. सो यू विल ट्राई टू हैंडल देम. फाइन. एंड फर्दर यू विल ट्राई टू हैव देयर टेस्टिंग. फाइन. सो आई कैन से दैट development over feature are done, and further testing lies. Testing features, testing process will continue. Okay, testing procedure will also continue. Fine. And here you will start mentioning the versions of your I can say software, not system, software, that this is a particular version. If you make any other change, then again you will change the version. It will be, if initially it was 1.0, then you will make it as 1.1. Then if you make any other change again, then you will make it as 1.2. So here in the development or the test phase, whatever the features you need in your software, you will just develop them and will have a testing phase. But testing phase को ज़्यादा elaborate नहीं करूँगी. I think so आप लोगों को testing phase पता ही है कि आप लोग यूनिट टेस्टिंग करोगे और आप लोग क्या करोगे, अपनी सिस्टम टेस्टिंग करोगे. ठीक है. तो सी इस फेज में क्या होगा, फिर आपका टेस्टिंग फेज ही आएगा. आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, इंटीग्रेट किया, हमने कोड किया और कोड को टेस्ट किया. फाइन. वंस यू आर डन विद दैट, आप उसको फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड करोगे. फर्दर प्रोसेस में आपके पास क्या है, आपके पास है लास्ट फेज, दैट इज योर प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन.
ओके, और आई कैन से रिव्यू फेज, जहां पे आप अपने इसके लिए रिव्यू करोगे, रिव्यू और प्लान द नेक्स्ट इटरेशन। ओके, इस फेज में अब आपके पास क्या होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फाइन, क्लियर? इट्स योर फोर्थ quadrant, and here what you will perform, students, you will see the customer's evaluation. Means you will, first of all, you will look out for the customer feedback. What are the feedback customer have? And then you will, if any kind of issue or any kind of, if your I can say that if your process, your software, your product is in the beta testing form, then you will take the feedback on the sincere mode, and further you will just do your regression testing. Here regression testing means based on the feedback you will do modification. तू भी तो मार्वल देखता है, मेरे को एक बात बताओ, जो वेनम बना था ना, उसका नाम क्या था? Is there any kind of bug? Further test to remove the bugs. सॉरी, सोनी का Get over there. मूवी में उसका to new modification. आपने जो भी न्यू मॉडिफिकेशन की, उस न्यू मॉडिफिकेशन के बेसिस पे पुराने कंटेंट में जो भी आपके पास बग आया, मिस्टेक हुई या फिर कोई इशू आया, उन सबको आप रिव्यू यहाँ पे रिमूव करोगे। ठीक है, तो सी क्या होता है लास्ट फेज में, रिव्यू और नेक्स्ट प्लान द नेक्स्ट इटरेशन फेज में कस्टमर फीडबैक लोगे। ओके, कस्टमर फीडबैक लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये नीड इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये चेंज इंपॉर्टेंट है, ये चीज की कुछ भी चेंज करना है, दैट इज कंपल्सरी, सो यू विल डू रिग्रेशन टेस्टिंग। मीन्स पहले आप उसको फर्दर डेवलपर के थ्रू उसमें ऐड ऑन करवाओगे, उसके बाद उसमें रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। रिग्रेशन टेस्टिंग में यही आएगा कि आप न्यू जो भी मॉडिफिकेशन हुई है, न्यू ऑल्ट्रेशन जो भी प्रोजेक्ट में हुई है, उसकी वजह से पुरानी ऑल्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई बग आया है, तो उसको रिमूव आउट करना है। दैट इज योर रिग्रेशन टेस्टिंग। See, this is all about your spiral model. Now see what happens. इसमें आप फ्यूचर एनालिसिस करते हो। Let's suppose अगर इसे डेवलप कंपनी ने आप अटेंडेंस एप्लीकेशन स्पाइरल मॉडल का यूज की है, ऑफ कोर्स, तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि वो आपके फ्यूचर के रिस्क के बारे में सोचेंगे कि हाँ जी अगर कभी ऐसा हो गया, किसी के हाथ में कट लगे या फिर कोई भी नॉर्मल इशू आ गया, लाइक कोविड का इशू तो बहुत बड़ा था। ओके, तो अटेंडेंस कैसे मार्क की जाएगी? द पर्सन इज नॉट एबल टू हैव द अटेंडेंस यूजिंग थंबप्रिंट, सो इस केस में अटेंडेंस कैसे मार्क होगी? तो उस केस में आई रेटिना एंड फेस डिटेक्शन ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस। सो ये सब चीजें आप लोगों की फ्यूचर रिस्क में एनालिसिस होती है, जो कि वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज हमारे स्पाइरल मॉडल में पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई इफ आई डू द कंपैरिजन बिटवीन स्पाइरल एंड बिटवीन योर waterfall, you can say that spiral is better as compared to waterfall. Clear? Is it clear to everyone? Anyone having any doubt here? नमन तो सोया भाई, अभी कह रहा था सो क्या हुआ मैं ब्रेक हुए। What about others? सो लिए और क्या, आधा घंटा ले लिया, नैप लिया था। भाई एक बात बता, हमारी क्लास खत्म हुई 12:45 पे और दूसरी क्लास शुरू हुई 1:30 पे। तेरे को 45 मिनट का टाइम मिला, ठीक है? उसमें जाहिर सी बात है तूने खाना भी खाया होगा, है ना? After that, मान ले 10 मिनट तेरे खाना खाने में लगे, तो आधे घंटे में सो के उठ के तेरी नींद पूरी हो गई। स्पाइरल मॉडल दिस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन, जो हाँ नींद तो पूरी हो गई, ये कह सकते हो। Once you are done with all the prototypes, you will do operational prototype. Means आधे घंटे में सब you will just merge out them, and after merging you will do your unit test, your system testing. You will integrate them and you will do your system testing and will release the product. पहले सोच रहा था कि मैं कोई एक सीरीज, एक एपिसोड देख लूं मैं। This is whole about कौन सी सीरीज देख रहा है आजकल? अरे वो देख रहा मैंडलोरियन। Is it clear? बढ़िया है। अगर तूने स्टार वॉर्स देख रखी है ना सारी, बेबी योडा वाली ना? हाँ बेबी योडा वाली, वही देख रहा था। So let's continue again. ओ भाई, नई वाली कब आ रही? 22 में आएगी ना अब तो। कौन सी? Next we will continue with the V model. क्या कोई भी मार्वल की
मार्वल की वो आ रही है, फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर आ रही If है I talk 27 about मार्च V-model, शायद से। I मार्च can नहीं say है। that the design of your V model is similar like to your V. Okay. Now see what we have in a V model. First of all, let me just try to make it if it's possible for me. See, this one is your coding part. Okay. Let me make it. Just hold for 1 second. Okay. And then further you will be having one, two, three, four. क्या बना रही है Like मैम this. जी? Okay. Now let me write here. This one is your requirement analysis. Okay. See, this one is requirement. This one is your system design. वी मॉडल है, वी मॉडल है। Then here we have our I can say architecture design. Then in the next we have our module designing, and last we have coding. Okay, and then we have here unit testing. Then here we have our integration testing. Oh, क्या कर रही है मैम? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ भाई क्या हो रहा है? नहीं मतलब मैम ने सर्कल बना दिया, उसके बाद भी एक और सर्कल ओवरलैप करवा रही थी। last and second are system testing and acceptance testing. Here we have. So this is your total V model. Fine. Clear? Now let's see, students, what we have in a V model. Okay. See, if I talk about V model, students, V model means this is mainly used for your verification also. Okay, for verification process, for your, I can say, this is even being used by your quality assurance team also. Okay. Now, if I talk about the first phase, this is your acceptance testing part. Okay, this is a acceptance testing design. Then we have system design or system testing design, integration, unit testing, and then we have our coding part. Similarly, on the other side, we have our module, architecture, system, and requirement. किसमें? Okay, this one is a designing, this one is a analysis, and this they are our testing. Fine, it's clear. Now let's see, as I said, verification, validation. So in this phase, we have verification and validation. This is mainly used for verification and validation. So let's discuss about validation and verification. What is verification and what is validation? Okay. If I talk about verification, just 1 second, sorry. Yeah. If I talk about verification, verification means you will do your review testing, or I can say analysis or technical review. Okay. It is done without executing the code. You will just analyze your code without executing it. फिर एग्जाम में yeah, without execution you will analyze, you will try to verify your product,
Okay, I can say that in this particular process, the development phase we have development phase to find whether specified requirements are meeting or not, means they are up to the mark or not. Means what we have done, whenever as a developer, whenever I'm trying to develop any of the particular module, so whenever I'm just trying to test it, how whenever I'm trying to execute, of course आप लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, आप उसे एग्जीक्यूट जरूर करते हो. सिमिलरली किसी ने अपना डिजाइन बनाया तो एग्जीक्यूट जरूर करेगा. तो उस टाइम पे जो एग्जीक्यूशन होगी, उस टाइम के बेसिस के एग्जीक्यूशन के ऊपर आप अपनी वेरिफिकेशन करो. जस्ट 1 सेकंड. नॉट ऑडिबल. ये पागल है क्या? अगेन, इज इट फॉर एवरीवन? इसका ईयरफोन कौन सा, मुझे पहले ये बताओ. ओके, ऑडिबल ये क्या लिख रही है? तो अभिजीत सुडिन, ये टाइपिंग के नशे होते हैं. सुडिनली प्लीज रिफ्रेश डियर. क्या ही हो रहा है? तो नमन एक बात बता, तूने कहीं वो तो नहीं क्या, मुस्कान ने कुछ दिन पहले तेरे को वो भेजा था क्या? कुछ भेजा था वर्जियो वाला. फिर तूने करा तो नहीं ना वो? नहीं, क्यों करूं? वेरी गुड, दैट्स माय बॉय. मैंने क्या फायदा इसका? मैंने हर्षित को बताया था. जस्ट 1 सेकंड. क्या होता है? हाँ हाँ, मतलब वो 20 से करेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे बेटर कोर्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, प्लेसमेंट नहीं, सॉरी, ट्रेनिंग की. कुछ नहीं है. मेरा दोस्त भी कर रहा था, कर ले. मैंने उसका भी नहीं किया. तब जब इसने भेजा ना, तब मेरे को समझ आया कि अच्छा ये खेल चल रहा है ना. ठीक है, तेज हो रहे बड़ी. और तेज हो रहे हैं, हमसे तेजी है. अगर तेरे को कहीं हुई नहीं लग रही, तो तेरा आखिरी जो ऑप्शन है ना, मास रिक्रूटर कंपनी में है, फिर उसमें हो जाएगी. नहीं, मुझे एक बात बता, अभिजीत को आवाज नहीं, मैम रिकनेक्ट कर रही है अपने आप को. पहले ये बताओ, मैम कैसे पहुंच गई यूनिवर्सिटी? पता नहीं, मैं भी तो सही पूछ रहा था. घर से पढ़ा रही थी. अर्षित सही, मैं यही तो पूछ रहा था अभी. यस, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? पहुंच गई होगी अपने केबिन में. यस, ये देखियो, मतलब अभिजीत को आवाज नहीं आ रही, मैम ने खुद रिकनेक्ट कर लिया, बंद करके शेयरिंग वेरिंग सब बंद करी, उसके बाद रिकनेक्ट करा, फिर वापस आ गया. भाई कैसे से है? एक को स्प्लिट स्क्रीन चलानी नहीं आती, वो हमारे आईबीएम के मेंटर है, ये दूसरी आईबीएम की मैम है, अपने आप को रिकनेक्ट. इन्होंने एक दिन पहले के बीबी की वो नहीं देखी क्या, मतलब की गाइडलाइंस नहीं देखी? पता नहीं क्या चल रहा है यार. देख तो लेते कम से कम. So we are discussing about verification, means जो एक बार डेवलपर ने ये मैम तो नहीं है, चलो इनका तो समझ में आता है. ठीक है, था जब उसने प्रोग्राम किया है या कोड किया है, तो उसके बेसिस पे ही वो उसको वेरीफाई करेंगे, उसके बेसिस पे ही दे विल ट्राई टू जज इट. So that is a part of your verification. के बाद ये सुना भी क्या हुआ था? That come inside your तूने लगाया था ना पहला लेक्चर, और ज्वाइन नहीं कर पा रहा था वो. If I talk about validation, now in the validation means आप dynamic analysis. उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने करा कि जैसे क्लास शुरू हो रही तेरी डायनामिक एनालिसिस, डायनामिक क्लास शुरू होती है, हाँ 1:45 पे तेरी क्लास शुरू होती है ना, that is your functional. तो उसने क्या किया, 1:30 से तुम ज्वाइन करने बैठो, 1:45 पे बंद कर दिया टाइम. उसने टाइम का वो कुछ गड़बड़ कर दी, 1:45 तक कोई ज्वाइन ही नहीं कर सकता क्लास. बड़ा अजीब इंसान है. फिर उसने टाइम बदला. See, we will discuss about this later on. खुजली क्यों मचती है इसको? What happened actually? पता नहीं. In the validation part, एक वो है we प्रभजोत have सिंह, our उसके अभी तक सारे टाइम गलत ओवरड्यू चल रहे हैं. Okay, we have dynamic analysis. अभी से ही है, मतलब अभी धीरे-धीरे. What actually we are doing? We are just using functional and non-functional techniques, and that particular techniques are done by executing code. अगर simple language में बोलूँ तो इसमें हम लोग execution करते हैं अपने कोड का, और कोड एग्जीक्यूशन करके अपना आउटपुट जनरेट जो भी होता है उसके बेसिस पे हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं. इसका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क और नॉट. ओके, नाउ validation is a process, I can say, that is used to evaluate the software. Okay, अबे ये कौन है? The completion. Once you are done with the completion phase, पता नहीं किसी और की प्रोफाइल, और ये भी नहीं, थोड़ा बहुत बदलाव, पूरी की पूरी उसी की प्रोफाइल उठा के लगा रखी है. Using the validation technique or the process. ये क्या कर रखा है इसने? I think so it's quite clear.
And of course, validation is also done to check area whether expertise the database up management to the system. mark or Very not. good. अनोखे Okay? टीचर्स हैं, And अनोखे. up to the mark of whom? Up to the mark of Brilliant customer teachers. requirement, customer कहाँ से आते हैं? specifications. Fine. कौन Now है ये here, सब? if I talk about V कहाँ से model, आते so हैं? we have V for the verification. V contains verification. So means now you can see that हम कौन सा फेज यूज करते हैं. इसमें आप लोग टेक्निकल रिव्यू या एनालिसिस करते हो विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड. फाइन. Is it clear? Yes. Clear. Okay, Naman. What about others? Okay. Fine. Okay. Now, students, see one thing I want to tell you here. आपको अगर मैं डायग्राम दिखाऊं इसका, just one second, let me show you diagram. This is a particular diagram. इस particular diagram में एक साइड आप लोगों का verification है and another side we have validation. Okay, this is your verification phase. Sorry, let me take any of the design. Yeah, if I talk, this is your verification phase and this is your validation phase. Clear? So means in the V model we have both of the things, but one side we have verification and one side we have another side we have validation phase. Okay, and both of them, validation and verification, this is your verification, this is your validation. Sorry, this is your validation. Just wait, let me mark it here, it will be better. बारो बोल दिया ना इसलिए. अगर तेरे को ऑनलाइन टेस्ट पास करनी है ना किसी कंपनी के, तो तेरे को DSL को आनी चाहिए. Now see, now the combination of verification and validation together makes a V model. I think so it's quite clear. Now if I talk about the phases that we have here, design phase, in design phase we have requirement gathering, system designing, architectural design, module design, then we have coding, then we have unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. All of them are same. Requirement analysis वही है कि हम communication करेंगे अपने customer के साथ and we will try to get the requirement, we will try to understand the requirements, we will try to get the requirements, what are the expectations the customer have from us. Okay, then we have system design. System design is the same, means हम लोग क्या करेंगे, हम अपना एक सेटअप वगैरह क्रिएट करके अपनी प्लानिंग फेज को कंटिन्यू करेंगे इसमें. ठीक है. Then we have architectural design. In the architectural design, what we will do, we will just break our particular software into the modules, into the chunks, and we'll divide within the team. कि हाँ जी आप ये चीज पार्ट डेवलप करोगे, आप ये डेवलप करोगे, आप ये डेवलप करोगे. ठीक है. तो ये चीज आप क्या आती है आर्किटेक्चरल डिजाइन में. Then we have module designing. Okay. Breaking किया है पे architecture design में आप क्या broken down. You just try to broken down your particular software. आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में ब्रोक करते हो, एलोकेट करते हो, लेकिन जो डेवलपमेंट आते हैं दैट इज इनसाइड योर मॉड्यूल. इस चीज का ध्यान रखना. अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला है डिजाइन, तो डिजाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्किटेक्चर डिजाइन प्लस मॉड्यूल डिजाइन. बट अगर आपको दोनों चीजें तोड़ के बताई गई है, आर्किटेक्चर भी तोड़ के और मॉड्यूल भी तोड़ के, देन यू कैन से दैट इन द आर्किटेक्चर जस्ट आप उसको डिवाइड करते हो, मींस ब्रोक डाउन करके उसको प्रोटोटाइप से उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके आप उसे ब्रेक डाउन करते हो. उसके बाद जो एलोकेशन होती है वो करते हो, लेकिन जो डिजाइनिंग मींस परफेक्ट कोड जो आप लोग डेवलप कर रहे हो दैट इज इनसाइड योर मॉड्यूल डिजाइनिंग. फाइन. आफ्टर दैट नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल start your coding phase, whole combination. Okay, you will try to integrate your whole. Once before integration you will perform your unit testing also. Once you are done with the integration unit testing also, and once you are done with the integrating of code also, then you will perform your integration testing. Okay,
अब एक बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये भी टेस्टिंग कर है और सकते आपके हैं। पास सिस्टम टेस्टिंग है। ओके, जब आपकी यूनिट Minecraft टेस्टिंग की जो तरह। है, यूनिट टेस्टिंग आप परफॉर्म कर लेते हो, अपने सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हो, तो उसके बाद आप लोग सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। फाइन, लेट्स डिस्कस ऑल 3 स्टेप्स। यूनिट टेस्टिंग में आप लोग करते क्या हो, आप अपने हर एक मॉड्यूल को, डिफरेंट फेज के मॉड्यूल को डिजाइन करोगे। ठीक है, दीज यूनिट, इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग अपने टेस्ट प्लान्स होते हैं हमारे, हम टेस्ट प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं अपने। फाइन, अब इंटीग्रेट, आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया, देन यू हैव योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये बोल सकती हूँ कि वंस यू आर डन विद द यूनिट टेस्टिंग, तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। नहीं, नेक्स्ट, इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यू ऑल्सो परफॉर्म वन थिंग्स स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों का आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, ओके, वट एवर द मॉड्यूल्स यू हैव, आपने जो भी मॉड्यूल्स को कंबाइन किया गया है, आपने कितने भी मॉड्यूल्स को कंबाइन किया गया है, उनको आप अपने आर्किटेक्चर के बेस पे टेस्ट करोगे। ओके, आई कैन से दैट इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द आर्किटेक्चरल डिजाइन फेज। यहाँ पे हर एक जो आपको पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो आपके इन फेजेस के बेस पे, लाइक यूनिट मॉड्यूल डिजाइनिंग पे होगा, इंटीग्रेशन आर्किटेक्चर डिजाइनिंग पे होगा, सिस्टम टेस्टिंग सिस्टम डिजाइन पे होगा, इसीलिए एक दूसरे के पैरेलल में आ रहे हैं। ठीक है, आपने सारे टेस्टिंग परफॉर्म की, एट द लास्ट यू हैव योर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम लोग UAT भी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना एक्चुअली प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, और डिलीवर करने के बाद वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट जो है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब इसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम लोग डिलीवर करते हैं किसको है, या तो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो 100 to 200% को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं, या फिर हम लोग स्पेशल अपने टेस्टर्स बाहर से टेस्टर्स बुलाएंगे। ओके, मींस यू कैन कॉल एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और बहुत मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ द इंडिया होता क्या है कि स्टूडेंट्स को एज टेस्ट बुलाया जाता है, दे यूज्ड टू परफॉर्म द एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, एंड इफ इट गेट accepted then they will release the real software out. Fine, so this is all about your V model. Fine, now next, how it is different from your I can say स्पाइरल मॉडल। एक्चुअली स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि आप लोगों के पास पैरेललिज्म नहीं है। ठीक है, वहां पे आप क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो और फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पैरेललिज्म चेक करते हो, लाइक मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपका यूनिट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रेशन है, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम टेस्टिंग है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास पैरेलल सपोर्ट है। ओके, और जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है, it is होने तो वाली है, 10 मिनट तो बचे हैं। compared to your spiral, 9 मिनट बचे they are हैं, up क्या to the सो रहा है mark अभी? if you are using जा। this V मॉडल। अगर आप V मॉडल यूज कर रहे हो तो जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, they are totally up to the mark as compared to the spiral model. Although इसमें भी आप लोग फ्यूचर एनालिसिस करते हो, ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर एनालिसिस नहीं करते, फ्यूचर एनालिसिस इसमें भी करते हो। फाइन, बट कहीं ना कहीं इसके भी ड्रॉबैक होंगे। तो ड्रॉबैक इसका क्या है कि इसका बहुत ज्यादा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और ये जो मॉडल है बहुत ही ज्यादा लेंथी है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो इस चीज को भी रिमूव करने के लिए नेक्स्ट वी हैव आवर अजाइल मॉडल। फाइन, सो नेक्स्ट वी हैव आवर अजाइल मॉडल। जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर? वी मॉडल क्लियर हो गया आप लोगों को? सो दैट वी कैन कंटिन्यू विद द क्लियर हो गया जितना आता था। Any queries in this you have? Yes, any queries? Any one of you have any query, then you can ask me. कोई क्वेरी नहीं है मैम। No queries. यप, होशियार होते हैं हमारे, बहुत होशियार लोग। ये कौन है भाई? ये चला रहा है हर्षद। अच्छा तनेजा, व्हाट इज दिस? Yes, no queries. हैं? Fine. वो कह रहा सुनो और बताओ। वो आवाज तेज करेगा तभी तो सुनाई देगी। ये तो ड्रैगन बॉल की है, कोई कैरेक्टर है उसमें से। ये देखो ड्रैगन बॉल की है, बता देना पोल वोल आए तो।
आखिर में पोल भेजी। Fine. So let's continue again. Next we have our जवाब ही नहीं दे रहा मैम। agile model. Sad life. Okay. If I talk about agile model, students, for the current era, okay, current time, the organization is of high level, so they are using their agile model, or I can say agile process model. Okay, it's very versatile model for the development phase. Why versatile? Because first of all, it follows your iterative approach, means step by step ही procedure होगा, और आपका जो client है वो स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आप लोगों का क्लाइंट आप लोगों के साथ लिंक्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एट द लास्ट आप लोगों का क्लाइंट लिंक होगा, नो, आप लोगों के पास क्लाइंट जो होगा स्टार्टिंग टू एंडिंग तक आप लोगों का क्लाइंट लिंक होगा, और यू कैन इजीली कंटिन्यू विद योर phases, means you can ask him whether the output is according to his requirement, according to his need or not. Fine. So ये चीजें आप लोगों की आपके पास agile model में, so that's why we always prefer to develop any of the software with your agile methodology. Fine. Now just one second, एक मैं इसका डिजाइन बना के दिखाती हूँ। या सी थोड़ा सा मैं अप टू द मार्क शायद नहीं बना पाऊंगी यहाँ पे। विल शेयर द इमेज ऑफ कोर्स। आपके पास सबसे पहला आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद देन वी हैव आवर डिजाइन सेशन। ओके, डिजाइन के बाद देन आई कैन से देन वी हैव development session. Just one second. Okay, once you have your development, then we have a team of your quality assurance team here. Okay, and then again you have your, okay, we are left with one of the thing. Then you have your deployment here, and after deployment you have your again brainstorming session. तो ये पूरा फेज आपका चलता रहता है। सबसे पहले आप उनके पास फेज आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आप लोग करते क्या हो एक्चुअली? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में भी सेम टेक्निक्स हैं इसमें कि आप लोग अपना सोच कर रहता है बैठे हुए कि कैसे प्रोजेक्ट को इंप्रूव करें। इसमें क्या होता है कि आप क्लाइंट के साथ एक मीटिंग क्रिएट करते हो, मींस मीटिंग रखते हो। मीटिंग अब जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मीटिंग एक ही बार होगी, ठीक है? यू कैन कॉल योर क्लाइंट एनी टाइम। अजाइल में अपने क्लाइंट को कभी भी कॉल कर सकते हो, और ही हैज टू कीप, ऑल्दो बाकी रिस्ट जो भी बात होती है वो क्लाइंट और डेवलपर के बीच में होती है, क्लाइंट और टीम के बीच में होती है, बट द क्लाइंट, आई कैन से क्लाइंट इज बीइंग लिंक्ड विद योर होल प्रोसेस। तो आप लोग क्या करोगे? विद द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग करोगे। यू विल ट्राई टू फिक्स द रिक्वायरमेंट्स, उसके जो भी इश्यूज है यू विल ट्राई कि हाँ जी क्या क्या इश्यूज है। नाउ यू विल ऑल्सो से दैट कि ओके, like you will try to have a meeting with your shareholders, your stakeholders, all such persons also. Once you are done with the session, then
you will start designing your face. Okay, mid में वो सारी चीजें होती है, like आप लोग की प्लानिंग फेज भी होगी, प्लानिंग फेज के बाद आप लोग अपना ब्रेक डाउन भी करोगे, वो सब कुछ मिड में होता रहेगा, बट सिर्फ यहाँ पे आपको जो मेन पॉइंट्स है वही बताएं कि लाइक डिजाइनिंग फेज शुरू होगा। डिजाइन में आप लोग सारी ब्रेकिंग वगैरह करोगे, आफ्टर दैट यू हैव डेवलपमेंट सेशंस, तो अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दोगे। नो, डेवलपमेंट सेशन के बाद आपके पास ना एक टेस्टिंग का फेज आता है, और यहाँ जो टेस्टिंग का फेज है दैट इज बीइंग मेंशन्ड एज अ क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, उसको एक एज अ मेंशन किया गया है क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें हम लोग करते क्या है स्टूडेंट्स, क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास ना क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है एक। ओके, मींस टेस्टिंग के लिए हमारे पास एक टीम होती है क्वालिटी एश्योरेंस, जो मेनली आप लोगों के कोड को नहीं चेक करेगी, वो ये देखेगी आपके कोड में कितना लॉजिक है, कितना एरर्स है, वो ये चेक करेगी कि जो प्रोडक्ट है, फाइनल डिलीवरी जिस चीज की है, वो अप टू द मार्क है या नहीं है। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्वालिटी एश्योरेंस टीम हमेशा ही प्रोडक्ट पे देखती है, तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और अप टू द मार्क है या नहीं वो चीज चेक करेगी, एंड आफ्टर दैट उसको डिप्लॉय कर देगी। डिप्लॉय हो सकता है कि यूजर वर्क एनवायरनमेंट, जो भी यूजर ने अपना एनवायरनमेंट यूज करना है उस पर वो डिप्लॉय कर देगी, उसको इंस्टॉल कर देगी, या फिर हो सकता है अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है तो मैं अपने प्ले स्टोर पर डाल दूँ। ठीक है, और फर्दर आप लोग क्या करोगे, फीडबैक जनरेट करोगे उससे, जो भी यूजर का क्लाइंट का फीडबैक होगा दैट विल बी जनरेटेड, एंड दिस इज द वे एट द लास्ट टिल द फीडबैक इवन इन योर मेंटेनेंस पार्ट आप लोगों का क्लाइंट जो होता है आप लोगों के साथ लिंक्ड होता है। फाइन, सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हर एक फेज में आप लोगों का क्लाइंट लिंक्ड है, तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास कोई इशू आता भी है विद इन द सेशन, होल सेशन डेवलपिंग सेशन, तो आपका क्लाइंट आपको उसी टाइम बोल देगा। ऐसा नहीं कि पूरा आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दो और एट द लास्ट वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा या फिर मेरे अकॉर्डिंग ये बना नहीं, तो वो चीज यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे आपको विद इन द पॉइंट ही आपको बता देंगे, जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो आप उसको दिखा रहे हो तो उसी टाइम पे वो बोल देगा कि नहीं दिस इज नॉट अप टू द मार्क, तो इसमें आप लोगों का टाइम यूटिलाइज हो जाता है, मींस टाइम वेस्ट नहीं है। This is the only difference that we have, and that's why we always go with the agile methodology. Further, we have Scrum and Kanban, जो हम लोग next session में continue करेंगे. Meanwhile, you all can leave. Thank you for joining this चलो session. Have a हो nice गया day. भाई, हो गया, शुक्र है।